This is a stage where you have to decide your career. You have to plan your own goals and work out. Why I'm telling this is because this is an exam where you will be given 1.2 lakh salary approximately if you are selected. Now, if you compare any BDS salary right now, 20,000, 30,000, so it's a sort of yearly salary only. If you are given 1.2 lakh per month, that's a good amount. So, before preparation, you must be uh, thoughtful about your process. Is that the goal you are thinking of? Is that your cup of tea? How can you spare time? What sacrifice you can do regarding your enjoyment, regarding your job clinics? Many dentists who are our student have left their clinics. They are just focusing on dental Gpsc class 2. This time competition is too high. So what we are planning is when you are preparing, you must be knowing your competition. And at the end of these 3 months, you will be knowing that how many marks you are getting out of 200. Okay. So here it is an process by just passing prelim. Your 90% chances are clear. Okay. Because if you have passed the prelim, that means you are enough knowing about dental portion. You are handy with each and every dental questions. Now, why we are discussing these things are because sometimes people think that we mug up very good and we will be reading pulse and just giving the exam. Now, this is a common method, common approach with all the students. So, what I'm requesting is when you are preparing, you should be knowing your strategy that this is the way how to prepare. So, for prelim, if you're prepared, then that same thing will be used for interview also. Okay. So right now you have only one thing in hand for these 3 months. You should be focused only on your prelim part. Now, according to GPSC syllabus, they will be mainly focusing on final year subjects. But they are very smart in this. They will ask any question which is common to both final year subject as well as basic subject. Okay, for example, sterilization of anything. They can ask you anything about wound healing. They can uh, check your knowledge about saliva, enzymes, etc. So these are not topics for final year, but they want to make sure that your complete knowledge about the basic dental subjects as well as final year subjects are clear. Okay. So now let all the students join this, and after joining they have to mark their present. So we can start depending upon the number of students. Sometimes it happens that many of the students will not be knowing that this is the platform where we can uh, comment. So in the chat box, as you see that I have written present, you can discuss your doubts, you can post your queries, and you can just go with your dental GPSC preparation. So we will wait for all the students. Sometimes it happens in many people's life that they are preparing for NEET MDS, and at a stage where they are fully equipped with dental knowledge, dental GPSC comes. So they are automatically qualified for this exam because for NEET MDS preparation, you have to be thorough with all types of questions, case-based scenarios, scientist. So it's a stage where you will be easily
capturing the dental knowledge. Now, our students, those who are joined our academy around 15 to 20, all are having one scenario. Either they have passed BDS before 4 to 5 years, many have passed before 10 years. Second thing is they are already working somewhere, they are already set in their platform. So sometimes when we think that uh, why they are planning for GPSC after 10 years or after 5 years, because experience says that nowadays in dental clinics there are many problems arising. First is lack of patience. Second is if patients come, they will argue regarding fees. Third thing is many multi-specialty hospitals provide free treatment. Fourth thing is dental colleges are being going through camps and attracting patients. So I'm not going for negative side on the private clinic, but few dentists are having this problem that even after opening a clinic, they are not having job satisfaction. So what we are planning is we have to just focus on our goal that we have to pass GPSC, because once you pass, this is a government job and it will be very easy for you to just cooperate, or you have to go with your administration part in your hospital or CHC where you are posted. Okay. So now, since one or two students have joined, we will start today's lecture. I don't know why people are not joining, because sometimes, as I mentioned previously, all the students should be aware of this thing. Only one student has marked present. We will wait for other students also, because sometimes if they are late, it will be difficult for them to recall. So we will discuss the first question. Which of the following are useful diagnostic aids that can be used to determine if a tooth has a vertical crown root fracture? Now, though you know the answer, I would like to give some advice tips. First of all, your reading is important. Normal English reading की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. Your reading means after reading what the MCQ demands, or what is the answer required from this MCQ. Now they are asking which of the following, okay, are useful diagnostic aids. Okay, so see, one strategy I am giving you. They are asking which of the following are useful diagnostic aids. So it means that since here written are, so it's a grammatically a plural form, and majority of times what happens is if one point is going with the answer, if 2 points, okay, then you have to go with all of the above, because since here only one option is there which is uniform and which is common, you have to go with all of the above. So this is important MCQ strategy. First of all, go with grammatical things. Second thing is if one or two things are being going with the answer, then you have to go with all of the above. Okay, then you don't need to read these two other things also. Why I am telling this is in your exam, this is an important thing what I am discussing. In your exam, 180 minutes will be there, 200 questions will be there. So you are having shortage of time, okay? Because sometimes some questions will be too lengthy, and if it is a computer based exam, then it will be good for you to answer. But since this is an OMR sheet exam, you have to circle this. So this takes time.
So what we are suggesting is for every question, you cannot spare time more than 50 seconds. You have to remember this. So if you are very sure in the first attempt, then only you have to go for attempting. Okay. If you think that somewhere you are having doubt, then you should not go for that. Okay. Here the answer is D. Which of the following are useful diagnostic aids that can be used to determine if a tooth has vertical crown root fracture? Okay. So now when you are dealing with fracture, just one thing cannot be important. Okay. For fracture, first of all, clinical scenario should be there that when the pressure is released, okay, after biting, there will be pain. Okay. So pressure release. Then second thing is you have to go for multiple x-rays in different directions. Okay, so only one thing will not be going with vertical root crown root fracture. Here everything is important, all of the above. Okay, so radiograph is of importance. You have to go with different angulated radiographs. Now, what are these angulations? Okay, you understand this? What are these angulations? So 45-degree, 90-degree, different angulations are there to go for the proper fracture line. Okay, now see, this is important. A tooth with a vertical fracture through root structure has poor prognosis. So you have to stick to this point. How they will ask question: a 15-year-old child with maxillary central incisor has undergone trauma, shows vertical root fracture in the X-ray, and poor condition is there, poor prognosis is there, grade 1 mobility is there. So what is your treatment? So they will give you apexogenesis in option. You will think that we will restore the teeth. Then apexification will be there. Third thing is extraction. And fourth thing is conservative approach. So this is a confusing question. But since you are going with vertical fracture, so in this question, they are asking about specifically vertical fracture. And since it is mobile, you should not try to save the tooth, because if more than one or two things are negative on patient's part, you should try to eliminate the cause or remove the etiology, because that will lead to abscess or cyst in the future. Okay, hope my voice is clear. We will move to next question. A electric pulp tester, that is EPT or vitellometer, usually elicits a response at a higher than normal if a tooth being tested has. We'll wait for answers. We'll wait for the answer. Electric pulp tester or vitellometer usually elicits a response
at a higher current than normal. Okay, here it should be some error in the meter, but in which conditions regarding the tooth we can see that there is a higher response as compared to normal where there is electric pulp testing. So this question is for checking your diagnostic methods in endodontics. So second question is regarding electric pulp tester. We will wait for the answer. Even if you don't know, you have to just mark E or you can write don't know because that is a good habit. In your prelims also, you have to mark E where you are not knowing the answer. Mere living will not help. Dr. Savan has replied, hyperemia. Let's see. What is the other name for hyperemia? Here the answer is chronic pulpitis. Okay. So as you can see that here EPT, what is the main reason for using EPT? It uses electrical excitation and it stimulates A delta sensory fibers. So now correlate EPT, A delta sensory fibers. Okay. That thing you have to remember. Now, second thing is when there is a pus filled canal, so here there will be false positive. Okay. Though the pus is there, APT will not determine that it is non-vital or vital, but it will show that tooth is vital. But in nervous patient, once again we can see that it is false positive because excitation is more. So you can correlate electric pulp tester. E stands for excitation. Actually, it stands for electric, but we can correlate that in excitation response changes. Now, in recent dental trauma, the tooth is necrosed, but excitation will not be there. Okay, so in this case, there might be false negative. So when you are preparing, you have to just focus on this part when it is false positive, when it is false negative. Okay, so here the answer is chronic pulpitis. Okay, so in chronic pulpitis, they usually elicits a response at a higher current than normal. Now, next question, and once more you can go with this. In acute pulpitis, lower than normal. Okay, in chronic, it is higher than normal. In hyperemia, lower than normal. In pulp necrosis or abscess, no response. So from this, they can ask you question because they have a good tendency of asking questions from explanations. Next question. According to the buccal object rule, what my seniors used to tell is they gave me a golden advice. When more descriptive questions are there or grammatically they want to confuse you, so leave them at the first attempt. Okay.
Here they are telling that buccal object rule is there. Okay, tube is repositioned either at a more mesial or more distal angulation. Okay, root or canal farther from the field. So in the previous lectures also where we have discussed first, there was a grammatical mistake and based on English we could not conclude. So we will not discuss these questions. Okay, the rule is slope, same lingual, opposite buccal. In our routine RCT practice, we are using this rule. Okay, so they are telling that whatever angulation you are going for X-ray, for example, you are using mesial angulation. Okay, so on mesial side there will be lingual canal, and on distal side there will be buccal canal. This is the slope rule. As you can see, the slope rule. Now, next question. A trapezoidal outline of the pulp chamber is. Though you are not knowing the answer, you have to go with E if you don't know. And if you are knowing, you have to answer the question. Let's see what is the answer. The trapezoidal outline of the pulp chamber is characteristic of. One answer is there, mandibular molars. Let's see. We will wait for all the answers, then we will go with the discussion part. ई यानी कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना है या फिर आपने लिखा है मैंडिबुलर कैनाइंस. और कोई आंसर? So here the answer is mandibular molars. Very good answer by Dr. Jyoti. Okay. So now you have to go with the outline, with the access cavity outline, with the anatomy of roots, with the surface area. So this question does not merely insist you that you have to mug it up. Okay. आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ के प्रोस्टो में आपको सरफेस एरिया भी आएगा, फिर एनाटॉमी के क्वेश्चंस भी आएंगे, कितनी टाइम, कितनी कैनाल्स होती है. ठीक है, यू हैव टू आंसर एंड यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स इन दिस वे. ठीक है, विथ ऑल द टीथ. आप यहाँ पे इरप्शन टाइम भी लिख सकते हो, शेडिंग टाइम लिख सकते हो, रूट्स कब क्लोज होते हैं वो भी लिख सकते हो, उसके बारे में क्या क्या कौन सी कैनाल्स के कॉन्फ़िगरेशन है वो भी लिख सकते हो. तो व्हाट योर मेन गोल इज, यू हैव टू मेक द डेंटल पल्स, जो कि 2-3 बुक्स है, उसको एक ही आपकी एक नोट्स में बना देना है.
ठीक है, हमने क्या किया था एनाटॉमी में, टंग जो होती है उसके लिए हमने इतनी बड़ी टंग ड्रॉ कर दी, जो 2 पेज होता है ना उसमें। फिर यहाँ पे अलग अलग पेपिला ड्रॉ किए, अलग अलग पार्ट्स किए, टेस्ट बड ड्रॉ किए। फिर क्या किया, फिर कौन कौन सी नर्व सप्लाई वो अलग कलर से किया, ब्लड सप्लाई अलग कलर से किया। तो ये पूरे के पूरे पेज में टंग के जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, नर्व सप्लाई के होते थे, ब्लड सप्लाई के थे, लिम्फेटिक ड्रेनेज के आएंगे, टेस्ट बर्ड्स के बारे में आएंगे, पेपिला के बारे में आएंगे, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में आएंगे। तो हमने क्या किया था, एक ही पेज में अराउंड 20 क्वेश्चंस जो थे डेंटल वो टंग के बारे में, वो सब एक जगह पर रख दिया था। Now what will this impact? Because for any questions for nerve supply or blood supply or lymphatic drainage, you will not be confused because you already know that this is the only answer. Okay, so you have to prepare your notes also and show to us. You can WhatsApp us, we will guide you, because at the last moment it is not possible to revise all the 3 books for us or whatever quantity of books are there. So here the answer is mandibular molars. Now you can see the maxillary first molar is the posterior tooth with the highest endodontic failure rate. Now they can ask you question, which posterior tooth has the highest endodontic failure rate. Okay, so this has not been taught in your student or in endodontic books, but somewhere after going through explanation and discussion of all the previous year papers, it will make you sure that such questions will be easy for you in the exam. Next question, which of the following teeth most often refer pain to the temporal region? Okay, temporal region में which tooth pain will be referred? So when you are reading endodontics, you have to prepare your notes also regarding canals, regarding irrigants, regarding intracanal medicaments, regarding all the newer advancements in instrumentations, regarding properties of raw taper files. All these things you have to make sure that you are very clear with these things. We will wait for answers and then we will be going with the discussion. Which of the following teeth most often refer pain to the temporal region? One answer as there. A is the answer. Only one answer is there. Hope the question is too difficult. C from Savan, maxillary second premolars. Any other answer?
No one is answering right now. I think this is a difficult question. So the answer here is maxillary second premolars. Those who answered correctly, very good. So you can see the pain referral as well as the tooth involved. So when you are preparing notes, you have to go with this method. Okay, now they will change the question to which area the pain from maxillary canine is referred. They cannot also ask you this question. Okay, so this is important. Now which tooth will almost always यानी कि दो कैनाल्स तो हो गए होंगे. तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया यहाँ पे कैनाल्स, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, वो सब आपको एक तरह से लिख देना है. ठीक है. दो कैनाल्स वाले दांत कौन से हैं? मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में होते ही है. जो लोग क्लिनिक में आरसीटी करते हैं उनको तो ये पता होना चाहिए. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आरसीटी नहीं की होती. एनी अदर आंसर? ए यानी कि मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर वही आंसर है, क्योंकि हम जो आरसीटी करते हैं पता ही होता है कि दो कैनाल कौन से टूथ में होगी होगी. नाउ which of the following canals in a maxillary first molar is usually the most difficult to locate? ये भी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है. जो लोग आरसीटी करते हैं उनको पता ही होगा. We will wait for the answers. डिस्टो बक्कल आंसर मिला है एक. कुछ लोग मिस्यो बक्कल बता रहे हैं. मिस्यो बक्कल की मेजोरिटी हुई है. देखते हैं. Here the answer is मिस्यो बक्कल बिकॉज पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो कैनाल्स होती है. ठीक है, MB1 MB2. तो कभी कभार वही कैनाल में हमको लोकेशन में दिक्कत हो जाती है और परफोरेशन के चांस भी ज्यादा रहते हैं. Now you can see that they have given some percentage. In 59 percentage, a fourth canal is there, MB2. Okay, so they can ask some silly questions that in what types or in what percentage these canals can be found. Next question, which tooth may have a pulp chamber that is somewhat triangular as opposed to oval? तो बार बार मैं बता रहा हूँ आपको नोट्स कैसे बनानी है. जितने भी दांत है वो यहाँ पे लिख देने हैं. आपको लिखना है कि कैसी एक्सेस कैविटी है, शेप, कितनी कैनाल्स है, उसकी क्या क्या खासियत है, रूट सरफेस एरिया कितना है, उसमें कितना सीमेंटल एरिया है. तो जितने भी आपको अभी पॉइंट्स मिलेंगे आगे आगे जाकर, ऐसा एक पेज पर बना ही देना है.
ठीक है। तो आपको ये जब भी रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर सकते हो। इरप्शन टाइम भी ऐड कर देना है, कब वो एपेक्सोजेनेसिस में काम आएगा कि कब उसके एपेक्स क्लोज हो जाता है, तो वो भी आपको सॉल्व करने में काम आएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की एक मेथड होती है। ठीक है, यहाँ पे आंसर है डी। सब लोग डी ही बता रहे हैं। देखते हैं, किसी ने ए बताया है। ठीक है, विच टूथ में हैव ए पल्प चैम्बर दैट इज समवॉट ट्रायंगुलर। ठीक है, देखते हैं, आंसर है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर 1 1। ठीक है, उसका बेस ऑफ द ट्रायंगल जो वो एपेक्स वाला जैसा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, approximately what percentage of mandibular first molars for mandibular first premolars may have two canals। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मिजियोबक्कल 2 कितने परसेंटेज में देखने को मिलेंगे, तो आंसर है 59। तो अभी ये आपकी एग्जाम में अगर आएगा तो आपके लिए इजी रहेगा। फिर सब लोग बोलेंगे कि सर पल्स में से क्वेश्चंस नहीं आए। तो वी नेवर insist you that you read only one book. Our main goal is to make sure that you are thorough with all the portion of your dental subjects. अब टू कैनल्स और टू एपिकल फोरामेन, ऐसा कितने प्रतिशत चांस है या देखने को मिलता है? एक और स्ट्रेटेजी है एमसीक्यू को क्लियर करने के लिए। जितने भी ये नंबर्स वाले क्वेश्चन है, यानी कि परसेंटेज, वाटर पाउडर रेशियो, वो सब आपको एक पॉसिबल हो तो नोट्स बना दो उसकी अलग से, या कोई जगह लिख दो सारे के सारे डिजिट्स वाले। क्योंकि वाटर पाउडर रेशियो का भी आता है, स्ट्रेंथ के बारे में भी आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कितना होता है। ये जितने भी नंबर्स वाले क्वेश्चन है डिजिट वाले, वो आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर बन जाते हैं और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें आप गैस नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहला आंसर आया है ए। 5% ही ऐसा देखने को मिलता है। Approximately what percentage of mandibular first premolars may have two canals with two apical foramina? अगर आपको आंसर नहीं आता है तो भी आप ई लिखिए, क्योंकि ये आदत सी हो जाएगी। फिर पहले ए बताया फिर डी बताया। और कोई आंसर? वेरी गुड। ई ई इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपकी जो ओएमआर शीट होगी उसमें
ई एक ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी और ई होगा। अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको ई पर वो सर्कल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर है 25%, यानी कि बी, जो किसी ने बोला नहीं था। ठीक है, 25% चांस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट कैनाल फॉर ए मैंडिबुलर कैनाइन इज। ठीक है, मैंडिबुलर कैनाइन के बारे में, उसकी जो रूट कैनाल्स होती है वो कैसे होगी, वाइड होगी, थिन होगी। तो थोड़ा क्वेश्चन एनाटॉमी के ऊपर भी है, तो यहाँ से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दे विल आस्क यू क्वेश्चंस व्हिच आर मेनली डिपेंडेंट ऑन 2 to 3 सब्जेक्ट्स। हियर द रूट कैनाल फॉर मैंडिबुलर कैनाइन, तो आपको तीन में से ही आंसर देना है, ए बी और सी में से। काम थोड़ा इजी कर दिया आपका। अब इसके बाद हम क्लिनिकल बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये तो सारे इजी क्वेश्चंस थे। अब थोड़े नए पैटर्न के डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये भी चांस है। ठीक है, दो लोगों ने सी आंसर बताया है, समवन हैज आंसर्ड बी। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, उससे आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि कहीं ना कहीं पल्स तो आप करोगे ही करोगे, वो तो आपको देखो बाइबल जैसी है, हो ही जाएंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो मान लो कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आ गए 200 में से, तो जितने पल्स वाले हैं वो सब 50 क्वेश्चंस पर अटक जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीलिम के चांस ज्यादा हो गए। क्योंकि हम कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं बोलते कि एक बुक पढ़िए, आपको कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर लो, उसमें आप मैक्सिमम टेस्ट दे दो, और आप जितनी दे सकते हो उतने दे सको। नए नए टॉपिक्स मिलेंगे, उसका रिवीजन कीजिए। हम बैठे हैं आपको डिस्कशन करवाने के लिए, सॉल्यूशन करवाने के लिए। आपको कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम डिस्कस करवा के इजी कर देंगे। ठीक है, यहाँ आंसर है थीन मिजियोडिस्टली बट वाइड लेबियोलिंगुअली। ठीक है, तो आंसर आएगा बी। जिन लोगों ने बी बताया था वो आंसर है। अब हम गोइंग विथ केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, देख लो। आई होप कि आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। आप नहीं पढ़ सकते हो तो मुझे बताइए, तो मैं थोड़ा एनलार्ज कर दूंगा। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। पेशेंट 59 ईयर्स ओल्ड का है। ठीक है, तो यहाँ पे एज दी गई है। फिर बहुत सारे टीथ मिसिंग है, और बहुत सारे टीथ मोबाइल मोबाइल भी है। और पेशेंट का जो माउथ है वो ड्राई है, और वो इतनी सारी मेडिकेशंस पर है, हाइपरटेंशन मेडिकेशंस, ये सब सारी चीजें है। और ये सब करंट फाइंडिंग्स है। ठीक है, तो पढ़ लो आप आपकी तरह से, और फिर क्वेश्चन देख लो क्या है। ये पेशेंट में हम सारी चीजें कर सकते हैं, खाली एक चीज नहीं कर सकते। ठीक है, नीचे की जो चार सी चीजें, उसमें से हम एक चीज नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज है? ठीक है, आपको ऐसे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी ट्रिकी होते हैं। आंसर एक बताया है डी। देखते हैं क्या आंसर आता है, और भी बच्चे आंसर बोलेंगे बाद में।
यहाँ पे ऐसा है कि ये पेशेंट की कंडीशंस देखिए, फीमेल है तो ऑटोमेटिकली ये पोस्ट मेनोपॉजल होगी शायद, 59 एज है इसलिए। दूसरा ये है कि माउथ ड्राई है, यानी कि कोई दवाई लेती होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, बीपी है, डायबिटीज है और सिलेटिव भी लेती होगी शायद। और ये सब चीजों में आपके पास वो पेशेंट आता है तो आप क्या नहीं करोगे, ठीक है। बाकी सब कर सकते हो, और क्या नहीं करोगे, या क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। सब लोग इसमें डी बता रहे हैं। यहाँ पे आप हाइपरटेंशन देखकर यही सोच रहे हो कि यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक विद एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब भी हाइपरटेंशन होता है तो आपको एपिनेफ्रिन यूज नहीं करना है, ठीक है। एपिनेफ्रिन तो उसके एडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो यहाँ हाइपरटेंशन का कोई वैल्यू दिया नहीं है, खाली ब्लड प्रेशर दिया है 123 या 78, ठीक है। वो तो नॉर्मल है, ठीक है, यानी हाइपरटेंशन कंट्रोल में है। तो ये आंसर नहीं आएगा डी, इसका आंसर आएगा ए, एंटीबायोटिक प्री मेडिकेशन प्रायर टू सर्जिकल प्रोसीजर्स। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, हम थोड़ी एंटीबायोटिक्स देंगे पहले, ठीक है। एंटीबायोटिक्स तो सिस्टमिक कंडीशन जो होती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होती है, उसमें हम एंटीबायोटिक का प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। देख लो बीपी, देख लो उसका कितना है। अगर मेरे क्लिनिक में इतना पेशेंट आता है तो मैं तो ये यूज करूंगा ही करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि उसके एडवांटेजेस है। क्या क्या एडवांटेजेस है एपिनेफ्रिन के? पहले तो वो जो अपना लोकल एनेस्थीसिया है उसका एक्शन का टाइम बढ़ाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म कम करेगा, इसलिए उसका एक्सक्रीशन कम करेगा। फिर ब्लड लेस फील्ड होगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, कोई बात नहीं। Next question. What poses the most prevalent risk of pathogen transmission in the dental office? एक आंसर आया है ए। देखते हैं क्या आंसर है। Most prevalent risk of pathogen transmission in the dental office. सही है, यहाँ पे हम आंसर ए ही लिखेंगे, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया है, क्लिनिकल बेस्ड है और केस बेस्ड भी है। मेल है, 1 ईयर ओल्ड का, ठीक है, बच्चा है 1 साल का। पढ़ लो आप हिस्ट्री, फिर आपको सॉल्व करके मुझे देना है। मदर बोल रहे कि बच्चा गिर गया और बच्चे का दांत जो है वो बाहर आ गया, ये यानी कि एवल्जन का क्वेश्चन है। फिर क्या आएगा? मदर ने ये बताया कि हमने कभी भी डेंटिस्ट के पास अभी तक नहीं गए, और करंट फाइंडिंग्स कौन सा टूथ है, तो ई,
एवल्स्ट हो गया है और उन्होंने मिल्क में रखा है। ठीक है, अब डेंटिस्ट क्या करेंगे ये कंडीशन में वो बताइए। चार ऑप्शंस है। एक तो क्यूर अटैच करके सॉकेट को स्यूचर कर देंगे, दूसरे में सॉकेट को देखेंगे और मदर और बच्चे को शांत करेंगे, सांत्वना देंगे। तीसरा, टूथ को रीइम्प्लांट कर देंगे आजू बाजू दांत को स्प्लिंट करने के साथ। फोर्थ, खाली रीइम्प्लांट करेंगे, स्प्लिंट नहीं करेंगे। सब लोग सी बता रहे। बी, सी और बी। और कोई आंसर है तो बता सकते हो। देखते हैं आंसर। ठीक है, सब लोग बता रहे हैं कि आपको इंस्पेक्ट द सॉकेट एंड रीएश्योर करना है। ठीक है, तो वही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार जब भी कोई पेशेंट आता है, ठीक है, तो पहले तो ऐसा नहीं कि उसको ट्रीटमेंट दे ही देना है। हमारा एज ए डॉक्टर हमारा जो काम है, आपको ये सेम क्वेश्चन इसके साथ कोरिलेट करना है। जब भी कोई एब्सेस वाला क्वेश्चन दे, बहुत हाई फाई क्लिनिकल सिनेरियो दे, तो उसका ट्रीटमेंट तो सेम ही आएगा। आइदर कंजर्वेटिव आएगा, आइदर इंसाइजन ड्रेनेज आएगा, ठीक है, या लोकल इंस्पेक्शन आएगा। ये सब सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। यहाँ पे आएगा आंसर, सॉकेट को इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको रीएज्योर करना है। भले ही दांत निकल गया है, मिल्क में है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉकेट की कंडीशन को देख कर आप वो रीइम्प्लांट कर सकते हो। लेकिन तो इंस्पेक्शन तो पहले आएगा ही आएगा। ठीक है, सीधा थोड़ी रीप्लांट कर दोगे। तो ये थोड़ा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको, मतलब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बट कभी ना कभी ये चीज याद रखनी है हमको एज ए डेंटिस्ट। स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, तो इंस्पेक्ट। एप्सिस वाला पेशेंट आया कि भाई बहुत ही ज्यादा एप्सिस है, बुखार रही है, तो क्या करोगे, तो ऑप्शंस में एंटीबायोटिक्स होंगे, ये होंगे, लेकिन आप खाली इंसिजन और ड्रेनेज का आंसर ढूंढना है जब भी एप्सिस का क्वेश्चन आए तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट। वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये। फीमेल है, 25 साल की। माई अपर लेफ्ट बैक टूथ हैज बीन सेंसिटिव टू हॉट कोल्ड एंड च्यूइंग। ठीक है, यानी कि मान लो ऊपर का 6 7 में से कोई होगा या यहाँ के कोई होगा। हैज नॉट सीन ए डेंटिस्ट फॉर 5 years, एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू मेंटेन अ टीथ, उसको निकालना नहीं है। और आपने एक्सरे में देखा ये एपिकल रेडियोलुसेंसी है 1/5 में। ठीक है, तो ये 6 7 निकल गई है, 1/5 यानी कि यहाँ पे आएगा। तो 1/5 में रेडियोलुसेंसी है, तो अब इसमें क्या करोगे बताइए।
पेशेंट को पेन है, एपिकल स्वेलिंग है, ठीक है, और आपके पास वो पेशेंट आया है कि उसको दांत निकालना नहीं है, तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे? आपके क्लिनिक पर आया है तो। और नाइट पेन है, ठीक है, नाइट पेन है तो मतलब इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की ओर जा रहा है, फिर एपिकल रेडियोल्यूसेंसी भी है, तो इनिशियल जो डैमेज होना था वो हो चुका है, लेमिनल ड्यूरिया भी चला गया होगा एपिकल रीजन में, ठीक है, और थोड़ा माइल्ड एब्सेस जैसा हो चुका है, तो इसमें आप क्या करोगे? आपके क्लिनिक में ये पेशेंट आया तो आप क्या करोगे? आरसीटी करोगे, तो इसमें आंसर आएगा डी, क्योंकि ये कंडीशन में आरसीटी और वो जो साथ में दवाई देते हो आप, वो तो देना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे आगे जैसे जैसे थोड़े टॉपिक्स भी पढ़ाएंगे, फिर हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो बहुत सारे बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है, तो एक साथ 10 या 12 बच्चे भी हो जाएंगे 2-3 दिन में, तब भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं भी होते तो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मंडे या ट्यूसडे से हमारा जो सीरीज है, लेक्चर सीरीज फाइनल ईयर का, वो सब चालू हो जाएगा, ये एक तरह का डिस्कशन हो जाएगा, और आपको जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होना चाहिए वो यहाँ से मिलेगा। हम वो रटा हुआ घिसा पिटा जो होता है, आपको ये क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड, आपको प्रेजेंट कंडीशन क्या क्या करना है, कैसे नोट्स बनानी है, वो सब गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहले तो ये देख लीजिए, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उसका मतलब क्या है कि जो हमारे बॉडी में जो ओरल फ्लोरा होते हैं नॉर्मल, या बॉडी में माइक्रोबियल फ्लोरा नॉर्मल होते हैं, गट में होते हैं, माउथ में होते हैं, तो वो तब तक अपना रूप नहीं दिखाते जब तक बॉडी की कोई प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, या पेशेंट ध्यान नहीं देता है, तब तक। तो जब भी बॉडी में कोई इम्यूनिटी लो हो जाती है, सिस्टमिक डिसीज हो जाता है, या कोई माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर हो जाता है, या पुअर ओरल हाइजीन होता है, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब जाके ये बैक्टीरिया अपना असली रूप दिखाते हैं, बढ़ जाते हैं, और वो टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं और एक इन्फेक्शन जैसा क्रिएट कर देते हैं, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने अपना इन्फेक्शन चालू किया, ऐसा। तो जब भी ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आता है, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे असली रूप बताएंगे, उस हिसाब से आपको आंसर पता चलेगा। मैंने हिंट तो दे दिया आपको। सही है, आंसर बता रहे डी, वेरी गुड। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, वो मेनली जब भी आप देखोगे ना, तो इट इज फंगल ओनली, तो आपको एंटी फंगल्स देना है, ठीक है, क्लोट्राइमेजोल है, निस्टाटीन है, एम्फोटेरिसिन बी है, वो सब आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारा एकेडमी का नॉलेज चालू होता है कि जब भी फंगल आता है तो आप क्या करोगे, एक जगह पर जितने भी फंगल डिसऑर्डर्स है, कैंडिडियासिस, मोनिलियासिस, कौन से ऑर्गेनिज्म से होते हैं, क्या क्या फीचर होता है, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट आती है, कौन सी दवाई लॉजेंस में हम यूज करते हैं, कौन से माउथ वॉश में यूज करते हैं, कितना यूनिट्स होना चाहिए, सिस्टमिक एंटी फंगल्स कौन कौन से है, वो सब आपको पता होना चाहिए उसके डोज के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको यही पूछेंगे कि मुझे डेंचर स्टोमेटाइटिस ट्रीटमेंट समझाइए, तो ये वही चीज है जहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि खाली प्रीलिम पास करके आपको ये सीट नहीं मिलने वाला है। तो इससे बेहतर यही है कि आप अभी से ही जो हम पढ़ा रहे हैं अभी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, वो आप अभी से ही थोड़ा प्रैक्टिकली भी अप्रोच रखिए। मान लो कि कोई पेशेंट आया तो हम उसको क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, कितने डोज में देंगे,
इंजेक्शन में कौन कौन सी दवाई देंगे, डाइक्लोफेनेक में कितने यूनिट्स देंगे, उसकी एलर्जी है तो क्या देंगे. तो you have to think this way practically also, because in interview they can ask you these questions. If patient is allergic to diclofenac and paracetamol, which type of analgesic will you give? ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि डेंटिस्ट्री के साथ, बट यू आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी क्लिनिक इफ यू आर सिलेक्टेड. तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये कंडीशन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा. ठीक है, तो ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हो. तो आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए. ठीक है, आज हम यहाँ पे लेक्चर एंड करेंगे. आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो पढ़ने में, नोट्स बनाने में, तो आप हमारा कांटेक्ट ले सकते हो. ठीक है, हम अभी कांटेक्ट नंबर भी यहाँ लिख के देते हैं. एक मिनट, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे जो डेंटल फ्रेटर्निटी है उसके लिए नॉलेज का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सोर्स मिल जाएगा. हम कभी कभार बच्चों को यही बोलते हैं कि पढ़ाने में नहीं, हमको जो बच्चे आगे जाते हैं उनका कैरियर देखकर, उनका प्लेटफॉर्म देखकर हमको खुशी होती है. बहुत सारे बच्चे जो भी एम्स में हमारे एमडीएस पास करके प्रोफेसर भी बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए, जीपीएससी पास करके भी गवर्नमेंट सर्वेंट है. तो कहीं ना कहीं ये खुशी होती है. So it's never late to join our platform. We are providing test series, notes, everything related to dental GPSC. In the future, we are starting Meet MDS platform also. So this will be a platform where we will be able to attend any dental exam coaching. Thanks for watching. Have a nice time and good night.